श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायाम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूतुवाच। गंगातीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा सा हि लिङ्गमयी गेया शिववासस्थली स्मृता। लिङ्गतत्रैव मुख्यं च सम्प्रोक्तं विमुक्तकं कृत्तिवासेश्वर साक्षात् तुल्यो वृद्धबालकातिलभाण्डेश्वर क्षैव दक्षाश्वमेध एव च गङ्गासागरसंयोगे सङ्गमेश इति स्मृता। भूतेश्वरो य सम्प्रोक्तो भक्तसर्वार्थ सदा नरीश्वर इति ख्यातः कौशिक्या स समीपगा वर्तते गण्डकीतीरे वटुकेश्वर एव सा पुरेश्वर इति ख्याता फल्गु तीरे सुप्रदा सिद्धनाथेश्वर क्षैव दर्शनातिसे दिदो नृणां दुरेश्वर इति ख्यातः पत्ने चोत्तरे तथा शृङ्गेश्वरक्ष नाम्ना वैद्यनाथस्थैव च जप्येश्वरस्तथा ख्यातो यो दधिचिरस्थले गोपेश्वर स्माख्यातो रङ्गेश्वर इति स्मृता। वामेश्वरक्ष नागेश कामेशो विमलेश्वरा व्यासेश्वरक्ष विख्यातः सुकेशक्ष तथैव हि भाण्डेश्वरक्ष विख्यातो हुङ्कारेशस्तथैव च सुरोचनक्ष विख्यातो भूतेश्वर इति स्वयं सङ्गमेशस्तथा प्रोक्तो महापातकनाशना ततक्ष तप्तकातीरे कुमारेश्वर एव च सिद्धेश्वरक्ष विख्यातः सेनेक्ष तथा स्मृत। रामेश्वर इति प्रोक्तो कुम्भेक्ष परोमता नन्दीश्वरक्ष पुञ्जेश पूर्णायां पूर्णकस्तथा ब्रह्मोक्षर प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापिता पुरा। दत्ताक्षमेध्यतीर्थे हि चतुर्वर्ग फलप्रदा तथा सोमेश्वरस्तत्र सर्वापदि निवारका भारद्वाजेश्वरक्षैव ब्रह्मावर्च प्रवर्धका शूलटकेश्वर साक्षात् कामनाप्रद ईरिता माधवेक्षक्ष तत्रैव भक्तरक्षा विधायका नागेक्षाक्ष शाक्य प्रसिद्धो हि साकेत नगरे द्विजा सूर्यवंशोद्वाना च विशेषण सुप्रदा पुरुषोत्तम पुर्यातु भुवनेश सुसिद्धदा लोकेक्ष महालिंगा सर्वानंदप्रदायका कामेश्वर शंभुलिंगो गंगेक्ष परशुद्धिकृत शक्रेश्वर शक्रसिद्धो लोकानाहितकाम्यया तथा वटेश्वर ख्यात सर्वकाम फलप्रदा सिन्धुतीरे कपालेशो वक्त्रेश सर्वपापहा धौतपापेश्वर साक्षादंशेन परमेश्वरा भीमेश्वर इति प्रोक्ता सूर्येश्वर इति स्मृता। नदीश्वरक्ष विज्ञेयो ज्ञानदो लोकपूजिता नाकेश्वरो महापुण्यस्तथा रामेश्वर समृता विमलेश्वर नामा वैकण्ठेश्वर एव च पूर्णसागर संयोगे धर्तुकेशस्तथैव च चन्देश्वरक्ष विज्ञेक्षत्र फलप्रदा सर्वकाम प्रदक्षेव सिद्धेश्वर इति स्मृता। बिल्वेश्वरक्ष विख्यातः क्षान्धकेशस्तथैव च यत्र वा अन्धको दैत्य शङ्करेण हता पुरा अयं स्वरूपं मेषन् धृत्वा शम्भुपुनास्थिता शरणेश्वर विख्यातो लोकानां सुखदा सदा कर्दमेश परप्रोक्त कोटिशक्षात् बुर्दाचले अचलेक्षक्ष विख्यातो लोकानां सुखदा सदा नागेश्वरस्तु कौशिक्यस्तात् स्थिरे तिष्ठति नित्यश अनन्तेश्वर संज्ञक्ष कल्याण शुभाजना युगेश्वरक्ष विख्यातो वैद्यनाथेश्वरस्तथा कोटीश्वरक्ष विज्ञेय सप्तेश्वर इति स्मृता। भदेश्वरक्ष विख्यातो भद्रनामा हरा स्वयं चण्डीश्वरस्तथा प्रोक्त संगमेश्वर एव च पूर्वस्यां दिशि जातानि शिवलिंगानि
यानि च समानयान्यपि चान्यानि तानि हि कथितानि ते दक्षिणस्यां दिशि तथा शिवलिङ्गानि यानि च सज्ञातानि मुनिश्रेष्ठ तानि ते कथयाम्यहम् इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोटिरुद्रसंहितायां शिवलिङ्गमाहात्म्य वर्णनं द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्याये सूत उवाच ब्रह्मपुर्या चित्रकूटे लिङ्गमद्गजेन्द्रकं ब्रह्मा न स्थापितं पूर्वं सर्वकामं समृद्धं तत्त्वपूर्वदिशि कोटिशं लिङ्गं सर्ववरप्रदं गोदावर्या पश्चिमे लतलिङ्गं पशुपतिनायकं दक्षिणस्यां दिशि कक्षिदत्रीक्षर इति स्वयं लोकानामुपकारार्थमनसूया सुखाय च प्रादुर्भूतं स्वयं देवो हानावृष्टा च जीवयत् स एव शङ्करा साक्षात् दस्येन स्वमेव हि ऋषियूचु सूत महाभाग कथमत्रीक्षरो हरा उत्पन्न परमो दिव्य सत्त्वं कथ्य सुव्रत सूतवाच साधु पृष्ठ ऋषिश्रेष्ठा कथयामि कथां शुभां या कथां स्ततं श्रुत्वा पातकैर्मूर्च्छयते ध्रुवं दक्षिणस्यां दिशि महत् कामदं नाम यद्वनं चित्रकूटसमीपेऽस्ति तपसां हितदं सतां तत्र च ब्राह्मणा पुत्रो हात्रिनामा ऋषि स्वयं तपस्तेपेति कठिनमनसूयया समन्विता पूर्वं कदाचित्त्रैव हानावृष्टिर्भून्मुने दुःखदा प्राणिना देवा द्विकटा शतवार्षिकी वृक्षा शुष्कास्तदा सर्वे बलवानि फलानि च नित्यार्थं न जलं कापि दृष्टमासीन मुनीश्वरा अर्धिभावो न लभ्येत खरावातो दिशो दशा हाहाकारो महान् सीत पृथिव्यां दुःखदोत्थितः सर्वतं चैव भूतानां दृष्ट्वा त्रिगृहीणि प्रिया साध्वी चैव ब्रवीदत्रिं मया दुःखं न सहावते समाधो च वलीनो भूदासने संस्थितं स्वयं प्राणायामत्रिरावृत्या कृत्वा मुनिवर्स्तदा ध्यायति समं संपरं ज्योतिरात्मस्थमात्मना च स अत्रिमुनिवरो ज्ञानी शङ्करं निर्विकारकं स्वामिनि ध्यानलीने च शिष्यास्ते दूरतो गता अनं विना तदा ते तु मुक्त्वा त्वं स्वगुरुं मुनिम् एकाकिनी तदा जाता सानसूया पतिव्रता शिशेवे सा च सततं तं मुदा मुनिसत्तमं पार्थिवं सुन्दरं कृत्वा मन्त्रेण विधिपूर्वकं मानसे सुपचारेक्ष पूजयामास शङ्करं तुष्टाव शङ्करं भक्त्या संसेविता मुहुर्मुहुः बधाञ्जलिपुटा भूत्वा प्रक्रम्य स्वामिनं शिवं दण्डवत् प्रणिपातेन प्रतिपक्रमणं तदा चकार सुचरित्रा सानुनसूया मुनिकामिनी दैत्याक्षदानवा सर्वे दृष्ट्वा तु सुन्दरीं तदा विपुलाक्षा भवन् स तत्र तेजसा दूरता स्थिता अग्निं दृष्ट्वा यथा दूरे वर्तन्ते तद्देव हि तथैनां च तदा दृष्ट्वा नायानातिह समीपगा अत्रेक्ष तपःक्षेवान् सूयासि शिवसेवनं विश्यस्ते समविप्रेन्द्रा मनोवाक्या संस्कृतं तावत् कालं तु सा देवी परिचर्या चकारः यावत् कालं मुनिवरा प्राणायामपरायणा तौ दम्पती तदा तत्र स्वस्वकार्यपरायणो संस्थितो मुनिदशार्दूल नान्यकश्चित् परास्थिता एवं जाते तदा काले हात्रेक्ष ऋषिसत्तमा ध्याने च परमे लीनो न व्यबुध्यत किञ्चन अन्नसूयापि सा साध्वी
स्वामिनी वै शिवं तथा भिजेनान्यत् परं किञ्चित् जानीते सं च सा सती तस्यैव तपसा सर्वे तस्याक्ष भजनेन च दिवाक्षरिष्यश्चैव गङ्गाध्या सरितस्तथा दर्शनार्थ तयो सर्वा परे प्रीत्या समाययु दृष्ट्वा च तत्पासेवां विस्मयं परमययु तयोस्तदूतं दृष्ट्वा समुभजुर्भजनं वरम् अभ्यो किं विशिष्टं च तपसो भजनस्य च अत्रैश चैव तपा प्रोक्तम् नुसूयानुसेवनं तत्सर्वमुभयो दृष्ट्वा समूर्चो भजनं वरं पूर्वैक्ष ऋषिभिक्षैव दुष्करं तु तपाकृतम् एतादृशं तु केनापि कं कृतं नैतद्ब्रुवन् धन्योऽयं च मुनिर्धन्या तथेयमनसूयिका यदेताभ्यां परपित्या क्रियते सुतपा पुनः एतादृशं शुभं चैत तपो दुष्कर्मुत्तमम् त्रिलोक्यां क्रियते केन साम्प्रतं ज्ञायते न हि तयोरेव प्रशंसा च कृत्वा ते तु यथा गतास्ते च तदा तत्र गङ्गानगिरिशं विना गङ्गामज्जन्प्रीता साध्वी धर्मविमोहिता कृत्वोपकारमेत्स्यागमिष्यामीति उवाच सा शिवोऽपि ध्यानसम्बुद्धो मुनेरत्रैर्मुनीश्वरा पूर्णाशेन स्थितस्तत्र कैलासं त्वं जगामः 50 तथा चात्र चत्वारि ऋषिसत्तमा वर्षाणि च गतान्यासन् वृष्टिर्नर्वाभवत्तदा या वाचाप्यत्रिना ओवं तपसा ध्यानमाक्षितम् अनसूया तदा नैव गृहीन्मिषतीशना कृता एवं च क्रियमाणे हि मुनिना तपसि स्थिते अनसूया सुभजने यज्जातं श्रूयतामिति इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसहिताया मनसूयात्रितपोवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः।